Hello everyone. So our topic for today is chapter number 4.4, my financial career, on page number 100. So first one is warming up. When you open a savings account at bank, you need to fill up deposit forms, right? So observe the following form and fill up your detail. That when you open your account, do you guys have account in the bank? अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो आपको ना डिपॉजिट फॉर्म या स्लिप्स भरनी पड़ती है पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो वो यहाँ पे दिया गया है. So observe the following forms and fill up your details. So the first one at the right you write the date. The शाखा is the branch, कौन से ब्रांच में आप भर रहे हो वो. फिर for the credit of, किसके लिए भराना है, लाइक द नेम ऑफ द पर्सन. फिर वहाँ पे जो ब्लॉक्स है वहाँ पे यू राइट द बैंक अकाउंट नंबर. फिर ड्रॉन ऑन बैंक के आपने कौन से बैंक से, मतलब कौन से बैंक में आपको भराना है वैसे. फिर द बैंक, जो बैंक में भराना है उसका ब्रांच. फिर चेक नंबर, चेक रहता है ना, आप चेक भरा रहे हो. सपोज यू आर एडिंग 5,000 रुपीज़, तो वो चेक है ना, उसके नीचे देर आर 3 चेक नंबर्स, ऐसे 3 चेक नंबर्स होते हैं, तो उसमें से वो एक आप कोई भी लिख सकते हो. फिर कैश नोट्स के, लाइक आई सेड 5,000, तो डायरेक्टली 5,000 का एक नोट है, या ये तो पहले का है, इसके लिए इसमें 2,000 भी है, तो 2,000 के नोट्स है, या 100 के. सपोज 2,000 के मैंने 2 नोट लिया है, 1,000 का एक नोट लिया है, तो 2,000 के सामने यू हैव टू राइट 2 एंड 1,000 का 1, कि जो आप 5,000 भर रहे हो वो कैसे भर रहे हो वैसे, उसका ब्रेकेज रहता है. फिर अमाउंट रहता है, एंड या दैट्स इट. एंड नीचे आपका डिपॉजिटेड बाय का सिग्नेचर रहता है. एंड देन द बेसिक एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड ऑल दोज डिटेल्स. फाइन. सो दैट इज़ हाउ यू फिल अ डिपॉजिट स्लिप. आई होप मैनी ऑफ यू माइट हैव फिल्ड 9th स्टैंडर्ड, तो मॉम डैड के साथ कभी गए होगे तो आपने भरा तो होगा. So yeah, that was sub question 1. Sub question 2 is write in your own words. Why does the bank need so many details of its customer? Why do you think the bank needs? So that उनके पास भी because they also have the details of the customer for the security purpose, for the integrity purpose. You can write everything. What problems do customer face when they have made a cash deposit at a bank? So there can be many problem. Maybe the signature is wrong, or maybe the details are wrong. So बहुत बार क्या होता है, अगर आपका signature ज़रा सा भी हिल गया रहेगा ना, और if it doesn't match the signature which the bank have, like बैंक के पास जो आपका details है उसमें जो signature है and the one which you have signed, maybe कभी कभी वो match नहीं होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम विच हैज़ बीन फेस्ड. या मे बी बिकॉज ऑफ कोई डिटेल आपने रॉन्ग भर दी हो. सो दैट प्रॉब्लम्स कस्टमर कैन फेस. व्हाट आर द लेटेस्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन योर ओन ऑन somebody's else account? Now most of the time people do it online, right? People transfer it. So you can write like NEFT, RTGS, ये बहुत सारे ट्रांसफर्स के मेथड्स है जो पीपल अभी लोग इस्तेमाल करते. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू इट ऑनलाइन. हार्डली पीपल डू लाइक लिटरली गो टू अ बैंक एंड देन डू इट. मेक अ वर्ड वेब ऑफ एटलीस्ट 12 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंकिंग. ओके, सो ये बैंकिंग को तोड़ के आप कौन कौन से नए, लाइक यू कैन मेक किंग और यू कैन मेक एनीथिंग, लाइक मतलब समझा, ब्रेक करना है बैंकिंग को. लाइक KING किंग बना दिया आपने, और कौन कौन सा बना सकते हो, बैंक हो गया, किंग हो गया, फिर ऐसे जंबल करके 12 वर्ड्स. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर माय फाइनेंशियल करियर. ओके, कि जो यहाँ पे ऑथर है वो अपना फाइनेंशियल करियर बता रहे हैं कि कैसे उनका गया. When I go into a bank, I get rattled. The clerks rattle me. The wickets rattle me. The sight of the money rattles me. Everything rattles me. What do you mean by rattles? Rattles is making nervous. Now, एज अ स्टूडेंट ये हमारे साथ कब होता है, व्हेन वी गो टू अ न्यू प्लेस, और समटाइम्स इवन इफ़ यू आर स्केर्ड ऑफ समथिंग और यू आर नर्वस ऑफ समथिंग, लाइक इवन व्हेन यू हैव बीन कॉल्ड टू योर प्रिंसिपल्स ऑफिस रूम, यू डोंट नो व्हाई बट देन यू गेट नर्वस. वो ऐसा थर होने को लगता है. योर लिप्स स्टार्टेड योर लिप्स स्टार्ट्स शिवरिंग. सो दैट इज़ व्हाट द ऑथर ओवर हियर इज सेइंग, दैट व्हेनेवर आई गो टू बैंक आई गेट लिटरली नर्वस. रैटल इज nervous. Okay, कि द बैंक, व्हेन आई जस्ट एंटर द बैंक, द क्लर्क्स ओवर देयर वो मुझे नर्वस करते हैं. द साइट ऑफ मनी रहता है बैंक में, राइट, तो वो मुझे नर्वस करता है. एवरीथिंग रैटल्स मी, दैट एवरीथिंग मेक्स मी नर्वस. The moment I cross the threshold of a bank, I am a hesitating jay.
If I attempt to transact business there, I become an irresponsible idiot. And as soon as I enter the bank, I become a hesitating J. What do you mean by hesitating J? A person who talks foolishly. कि मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलता हूँ. And if I want to do a transaction, if I want to do a money transaction, then I become a irresponsible idiot कि मुझे समझ में नहीं आता है. And then I become like a idiot person that I don't know what am I doing or what am I saying. I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt that the bank was the only place for it. So I shambled in and looked timidly around at the clerks. I had an idea that a person about to open an account must need to consult the manager. Okay, so why he was going to the bank, like why the author was going to the bank? Because his salary was being raised to $50, and then he thought that the bank is a safe place where I can keep this money. So he knew that whenever a person want to open an account or something, when they want to consult anything, they go to manager के manager के पास जाके वो लोग पूछते हैं. I went up to a wicked mark accountant. The accountant was a tall, cool devil. The very sight of him rattled me. My voice was sepulchral. Okay, what do you mean by sepulchral? Means एकदम डर डर के बोलते हैं ना, या एकदम ऐसे low voice में, that is called as sepulchral. So what he's saying that I went to a wicked. What do you mean by wicked? Wicked is basically you can say यहाँ पे what does it means, that he basically went to a cabin. वहाँ पे there are various cabins or various departments, you can say. बैंक में आप गए होगे, one is of accountant, one is of depositor, one is of cash withdrawal. सब accountants होते वहाँ पे, सब departments होते वहाँ पे जाके you can ask. So he said that I went to a department which was known as accountant. वहाँ पे when I went, the accountant was a tall cool devil. Devil क्यों? Because उसको सब लोग devil जैसे लग रहे. Why? Because he is getting nervous. The very sight of him rattled me and my voice was sepulchral. कि उनका sight, उनको देख के मैं वापस नर्वस हो गया. एंड माई वॉइस वॉज वेरी ग्लूमी एंड सॉरोफुल. मीन्स वॉट, एकदम डल धीरे आवाज़ में वैसा. Can I see the manager? I said, and added solemnly, alone. I don't know why I said alone. Okay, so what did he ask? That can I see the manager? And धीरे से उन्होंने बोला alone. अभी कोई भी बोलेगा ना अकेले आपको क्यों मिलना है मैनेजर को. So that is why as he said that I start becoming a J. What do you mean by J? As a person who talks foolishly. तो उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या अकेले क्यों बोल दिया वैसा. Certainly, said the accountant and fetched him. The manager was a grave, calm man. I held my $56 clutch in a crumpled ball in my pocket. Are you the manager? I said. God knows I didn't doubt it. Now, अभी मैनेजर के कैबिन में लेके गया तो मैनेजर के कैबिन में मैनेजर ही होगा. But since he entered there, he's like, are you the manager? And then he's again feeling that what rubbish question did I ask, because manager के cabin में तो manager ही होगा. तो that's what he's trying to say, that I become a J person, that I don't know what am I talking in front of people. Can I see you? I asked. Alone? I didn't want to say alone again, but without it the thing seemed self-evident. The manager looked at me in some alarm. He felt that I had an awful secret to reveal. Come in here, he said, and led the way to a private room. He turned the key. We are safe from interruption here, he said. Sit down. Okay. Manager को भी लगा कुछ alone बोल रहा है, मतलब क्या, there would be something secret he want to say, and that is why he took the author to another room, open the door, and he's like that here we won't get interrupted, मतलब यहाँ पे हमको कोई disturb नहीं करेगा, and now you can say what you want to say. We both sat down and looked at one another. I found no voice to speak. You are one of Pinkerton's men, I presume, he said. He had gathered from my mysterious manner that I was a detective. I know what he was thinking and it made me worse. Okay, तो उसको क्या लगा कि ये कोई Pinkerton's का man है, मतलब क्या, basically he thought that he is a detective and that is why he is not saying something. And when the author got to know, it made him more nervous.
No, not from Pinkertons, I said, seemingly to imply that I came from a rival agency. To tell the truth, I went on as if I had been prompted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. So he finally said that no, I am not from a Pinkertons person. I am not a Pinkertons person, and I am over here like to open my bank account. The manager looked relieved, but still serious. He concluded now that I was a son of Baron Rothschild or a young Gaul. So, what is Baron Rothschild? The wealthiest, most influential man of that time. Okay, तो उस टाइम का जो सबसे अमीर इंसान था ना, उनको लगा कि ये उसका बच्चा है. And Gaul is one of the richest man of that time. So he thought that ये उनका लड़का आया है, and that is why he have come here to save his money. Okay? As he said, I have come over here to open my account and to keep my money inside this account. Right? So he thought कि बहुत सारा पैसा लेके आया लगता है ये, and इसके लिए ये directly मुझे मिल रहा है. A large account, I suppose, he said. Fairly large, I whispered. I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. The manager got up and opened the door. He called the accountant. Mr. Montgomery, he said, unkindly loud. This gentleman is opening an account. He will deposit $56. Good morning. I rose. A big iron door stood open at the side of the room. Okay, so he fairly said what did the author said जो उनको बोलना था, that $56 मैं यहाँ पे अभी सेव करने आया हूँ, and every month I'll come over here to deposit $50. So even the manager he got angry कि भाई $56 इतना छोटे अमाउंट के लिए इसने मुझे बुलाया, and then he angrily like he वो वहाँ से खड़े हो गए, and then he called the person, the accountant, and he said that Mr. Montgomery, the person name accountant का नाम, and उसको बोला कि ये भाई को account खोलना है, and please help him. He will deposit $56 now and $50 every month. And then he went. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with a quick, convulsive movement as if I were doing a conjuring trick. My face was ghastly pale. He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum on a slip and sign my name in a book. I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. So accountant he called another person, and ये भाई साहब ने ऐसे फटाक से निकाल के पैसा दे दिया ना, as if he was doing some kind of trick or some kind of fun. And then द अकाउंटेंट ही मेड हिम राइट लाइक स्लिप भरते ना हम लोग, जितना डिपॉजिट किया ना वो स्लिप होता है, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा डिपॉजिट स्लिप देखी उसमें अमाउंट था. सो इन द सेम वे ही मेड हिम राइट द अमाउंट एंड ही मेड हिम साइन द स्लिप, एंड देन ही वाज लाइक द एंटायर पीपल ओवर देयर इन द बैंक वाज लुकिंग टुवर्ड्स मी. इज इट डिपॉजिटेड? आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, कि उसने एकदम धीरे से ऐसे पूछा कि डिपॉजिट हो गया क्या वैसा. इट इज़ सेड द अकाउंटेंट. Then I went to draw a check. So then he went to draw a check. चेक पे वो अमाउंट उन्होंने लिखा. डिपॉजिट स्लिप उसमें सिर्फ आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हो कि आपने उतना इतना डिपॉजिट किया, एंड पैसा भरने के लिए फिर उन्होंने चेक भरा वैसा. माई आइडिया वॉज ड्रॉन आउट $6 of it for present use. Someone gave me a checkbook through a wicket, and someone else began telling me how to write it out. The people in the bank had the impression that I was an invalid millionaire. I wrote something on the check and thrust it in a clerk. He looked at it. What? Are you drawing it all out again? He asked in surprise. Okay, तो उन्होंने क्या decide किया, the author, that I'll remove $6 for my daily use. So out of those 56, I'll remove 6 now. So he again was writing something on a check, and उन्होंने check पे वो $6 का amount लिखा कि अभी जो 56 deposit मैंने कर लिए है उसमें से मैं 6 निकाल देता हूँ. So when he was writing that 6 wala amount in the check, so the author the accountant over there was saying कि क्या आपने वापस सारे 56 के 56 निकाल दिए क्या.
what, are you drawing it out all again, कि आपने सब वापस निकाल दिए क्या? He asked in surprise, that he was shocked, right, कि भाई 56 अभी भरा and वापस 56 का 56 निकाल दिया क्या? Then I realized that I had written 56 instead of 6. I was too far gone to reason now. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. Now you can understand how this person, how the author over here is getting nervous. See, उन्होंने पहले 56 डिपॉजिट किए बैंक में, राइट, एंड उनको बाद में पता चला कि मुझे 6 अभी ये मंथ के रोज़ के काम के लिए मुझे निकालना चाहिए. तो भाई साहब, पहले ही आप $50 डाल देते ना, 56 भरने की ज़रूरत ही नहीं थी. अंडरस्टैंडिंग, आप पहले ही $50 डाल देते, 6 अपने पास रखते. पर इन्होंने नर्वसनेस में क्या किया, इन्होंने पहले 56 डिपॉजिट किए. आफ्टर डिपॉजिटिंग 56, ही थॉट दैट आई शुड रिमूव 6 फॉर माई डेली वर्क. सो वाइल राइटिंग चेक, इंस्टेड ऑफ राइटिंग $6, उन्होंने वापस 56 लिख लिए. मतलब क्या, ही वॉज अगेन विदड्रॉइंग 56. नाउ अगेन इन नर्वसनेस ही रोट ऑल द अमाउंट विच वॉज 56 एंड नॉट 6. Till then understood. Now next. I had a feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerks had stopped writing to look at me. Now everyone was again shocked कि भाई साहब ने 56 भरा, वापस 56 निकाला, and everyone was looking at me. Reckless with misery, I made a plunge. Yes, the whole thing. You withdraw your money from the bank. Every cent of it. Are you not going to deposit anymore? Said the clerk, astonished. So he was like that. Now if I give any reason, they will again think me as a foolish person, and that is why he said, yes, I want to remove every money. So again that accountant was asking, why you don't want to deposit anything over here? Never. An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check, and that I had changed my mind. I made a wretched attempt to look like a man with a fearful quick temper. The clerk prepared to pay the money. How will you have it? He said. Okay, so now he's saying that maybe they might think कि जब मैं चेक भर रहा था तभी मेरा माइंड चेंज हो गया. एंड वैसे वो एक्ट कर रहे थे ऑथर, ही वॉज एक्टिंग एज इफ while writing check my mind changed. Okay, and then the clerk was ready. Okay, he said that how would you now, अभी आपको कैसे चाहिए चेक, आपको चेक मतलब आपको कैश कैसे चाहिए $56. डू यू वॉन्ट इट इन चेक और डू यू वॉन्ट इन कैश? तो उनका पूछने का क्या था कि हाउ विल यू हैव इट, कि आपको कैसे चाहिए, चेक में या कैश में? वैसा व्हाट, how will you have it? Oh, I caught his meaning and answered without even trying to think. In 50s. He gave me a $50 bill. And the 6, he asked dryly. In 6s, I said. अभी उसको पूछने का था, द क्लर्क आस्क्स कि आपको चेक में चाहिए या कैश में, बट इन्होंने क्या बोल दिया, नहीं मुझे 50s में चाहिए. उनको लगा जो हम लोग ने ऊपर देखा ना डिपॉजिट चेक 50s में रहता है, 20s में रहता है, 100s में रहता है. तो फिर उन्होंने बोला इन रेस्ट ऑफ 6, बाकी के 6 कैसे दूँ? तो बोलता है इन 6s वैसा. ही गेव इट मी एंड आई रश्ड आउट, कि उन्होंने मुझे दे दिया एंड आई वेंट आउट. As the big doors swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. वो बोलते जैसे ही मैं बाहर निकला, I could hear that people all the people inside were laughing on me, and I could hear that voice. Since then, I bank no more. That since then, मैं कभी बैंक गया ही नहीं. I keep my money in cash in my trouser pocket and my saving in a silver dollar in a socks. And what he does that he's saying that I keep my money in the pockets, and जो मेरे बच्चे कुछ extra money होते वो मैं socks में रख देता हूँ, but I don't go into the bank. So this is what the chapter was, that basically the author is Stephen Leacock. Okay, basically वो नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस में उनको पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या बोलना है वहाँ पे, but that doesn't mean that you would never again go there. It's like basically when you keep on trying, you will understand, right? I remember
my mom and I used to go to the bank when I was in school days. And starting me, what I used to do was, near the bank there was garden. So what I was like, that mama, you go inside, you do the work, and I'll go into the garden. So till the time mama used to come, I used to play in that garden, like, jhula pe baith ke time pass. And then mom, like my mom, she realized that I should now take her, and even she should know that what are we doing. So then she started taking me in the bank, and then she introduced me that this is the डिपॉजिटर वाला बैंक, यहाँ से यू कैन रिमूव, यहाँ पे यू कैन मेक एंट्री एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ. सो लेटर ऑन थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलने लगा कि फ़ाइन ऐसा ऐसा बैंक में होता है. नाउ व्हाट मम्मा डिड वाज, शी स्टार्टेड टेलिंग मी टू फिल द डिपॉजिट का फॉर्म, कि जो डिपॉजिट का फॉर्म होता है ना, शी स्टार्टेड सेइंग कि अब नाउ यू स्टार्ट फिलिंग इट, बिकॉज आई यूज्ड टू सी माई मॉम फिलिंग दैट स्लिप. बेसिक स्लिप होता है, इतना कुछ नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू राइट योर अकाउंट नंबर, द अमाउंट, and the amount in words, and the date, and that's it. So then mama was like, now you start filling it. And I was like, okay fine. I was a confident girl, school age maybe. So I said fine, I'll fill it. Well, I used to fill it, and then I just used to wait for my mama to sign on that part. Signature hota hai depositor ka. So for that I used to wait, and then mama used to sign it. And then she was like, I'll stand now, मतलब मैं बैंक के नीचे खड़ी रहूँगी, and you go, and you know ना अपन कहाँ कहाँ पे जाते, because every time I used to accompany, right. थोड़े टाइम के बाद, as I said, mama started saying that you also come with me. So I knew कि कहाँ कहाँ पे जाते हैं. So then mama was like, ना अपन कहाँ पे जाके डिपॉजिट करते हैं, तो यू गो एंड गिव इट टू दैट अंकल, एंड चेक बुक रहता है, आपका चेक बुक होता है बैंक का, एंड वहाँ पे वो एंट्री भी करा के यू कम वैसा. तो मैंने बोला ठीक है. फिर आई यूज्ड टू गो देयर, एंड फिर मैं दे देती थी उनको, एंड कुछ नहीं, डिपॉजिट स्लिप सिर्फ उनको दे देना होता है. एंड फिर एंट्री कैसा होता है, वो जो चेक बुक होता है ना, पासबुक बोलते, सॉरी नॉट चेक बुक, पासबुक को उनको देने का, एंड फिर वो एंट्री करके देते हैं. तो उस पर किसने आपके अकाउंट में पैसा भरा होगा या किसने लिया होगा, वो सब आ जाता है. That is how, like, I became confident. I remember this was during 8th 9th, because 6th 7th May, I remember I used to go to that park only, and mama used to go there. But 8th 9th 10th, that was the period which made me confident enough that now I know okay fine कैसे transaction करना है. But now it's like hardly I go to bank, because अपना कैसे सब online हो गया. But still having a little knowledge is more sufficient, because कभी भी आपको काम आ सकता है. Sometimes maybe because of any reason you are not able to do it online, then you should know how to do it offline, right? So yeah, that is how it works. I just wanted to share some of my feelings, so I did. Okay, that is how we come towards the end. Now workshop part. Workshop में क्या है ये? First one is, if write the antonyms. Antonyms is opposite. So for afterwards, what would be the antonym? Afterwards का antonym क्या होएगा बच्चा लोग? It is from the chapter. हाँ, afterwards के लिए you can write afterwards is बाद में, तो you can write previously or you can write beforehand, but make sure वहाँ पे क्या लिखा है, that find it from the lesson. So lesson में कौन सा है वो चूज़ करना है, and if they are saying just write it by your own, तो फिर आपको वैसे लिखना है. फाइन. विड्रॉ इज़ आप पैसे निकालते हो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा. हम लोग ने चैप्टर में देखा कि ऑथर वेंट टू डिपॉजिट द मनी, सो विड्रॉल का क्या हो जाएगा, डिपॉजिट. समझ रहा है. केयरफुल ध्यान से, तो केयरफुल का आप क्या रेकलेसनेस लिख सकते हो. केयरफुल मतलब ध्यान से, तो नहीं ध्यान से करना, तो केयरफुल का क्या ऑपोजिट लिखोगे. अगेन आई गेस दे आर फ्रॉम द चैप्टर्स. हाँ, राइट केयरलेसली और पार्शली, इनकम्प्लीटली, बट वही अगेन देखो चैप्टर में से आप लिख रहे हो कि नहीं. कॉन्फिडेंटली, एज ही सेड ही वॉज इन दैट कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट. सो कॉन्फिडेंट यू कैन राइट अंडर कॉन्फिडेंट. ओके, बाकी के जो बच्चे, आई गेस 1-2 ही बच्चा है, चीयरफुल बच्चा है या एक ही बच्चा है, वो आप होमवर्क में करो. ठीक है. सब क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate word or idiom from the lesson. The dash solve the mysterious crime. क्या आएगा, word or idiom. So what would come, the dash solve the mysterious crime. So word आपको इसमें से निकालना है, passages में से, या you can write it by your own. So the detective solved the mysterious crime. Second one, in the examination, I did not know the answer, so I
क्या हो जाता है फिर अपन नर्वस हो जाते हैं. सो आई बिकम अ हेजिटेटिंग जे. ही वॉज डिजी एंड ही डैश इन टू द रूम. एक वर्ड देखा था हम लोग ने चैप्टर में, शैम्बर्ड. वाइल आर्ग्यूइंग विथ हिज एल्डर्स ही हैड डैश मेड अ wretched attempt to look like a man with a fearful quick temper. जो एक idiom जो यूज़ किया था चैप्टर में वैसे. So you can fill it like that. Next one, fill in the blanks choosing the appropriate word. Yeah, the sight of a snake dash. The sight of a snake rattled him. As soon as I dash off my home, I greet my family. Again from textbook, cross the threshold. So as soon as I cross the threshold, आगे का continue. Of my home, I greet my family. Sub question 3, using the following points, frame a character sketch of the narrator. Support each character trait with instances from the lesson. So over here 5 topics are given. Like first one is diffident and timid, that you have to make sure कि author जो थे वो diffident and timid थे. तो उसमें आप क्या क्या sentence या क्या क्या character उसके ऊपर लिखोगे वैसा. For diffident and timid, you can write the writer's salary was increased and he decided to put the $50 into the bank as he thought that the bank was a safe place, but he got diffident and timid to speak to the staff of the bank. Second, what was the unusual behavior of the author? So you can write, as soon as the narrator caught the sight of the accountant, his voice went sepulchral, right? वो एकदम nervous हो गए, एकदम low voice में हो गए. He asked for the manager and added solemnly alone. So again that was a wrong behavior, right? कि alone कोई भी बोलेगा तो कुछ किसको कैसा लगेगा, and that was the unusual behavior. The third one was ignorant about banking. So at that time you can write that the writer says the moment he crossed the threshold of the bank, he became a hesitating jay, and if he has to transact business there, he becomes an irresponsible idiot. So that you can write. Fine. तो 3 मैंने बता दिया, 2 आप लोग लिख लेना, ठीक है. नर्वस एंड केयरलेस एंड इकोनॉमिकल वो आप लोग लिख लेना. रिराइट इन द फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच, अगेन वो अपन ग्रामर सेक्शन में करेंगे. ओके, सो या दैट इज़ हाउ वी कम टुवर्ड्स द end of our chapter. I hope you have understood the chapter. The remaining questions which I haven't said and the textual ones जो chapter के बाजू में है on the left and right corner would be your homework. So yeah, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.